Good morning to all my dear students and welcome to Zoology online class. So I think today is the last class of the genetics, which that is in the previously I had completed, or that is I was continuing, that is the genetic disorder. That is the genetic disorder. On the genetic disorder, I have told you, let me repeat the previous thing in brief. Then the today only your subject take 5 to 10 minutes. Clear? Let me start, or let me repeat that is the previous thing. That is genetic disorder. Genetic disorder is an illness obtained by the abnormalities of the genes or the chromosomes. The genes or the chromosomes. So, the genetical disorder is caused by the defect in gene or in chromosomes. So, the defect which occurs by the genes and which is transmitted by that is according to the Mendelian principle of inheritance, it is called as the Mendelian disorder. Mendelian disorders. Clear? Then the genes, that is the disorder which, or the genetical disorder which obtained by the disorder or by the abnormalities of the gene and which is transmitted by or according to the Mendelian principle of inheritance is called as the Mendelian disorder. Similarly, that is the disorder in a chromosome is called as the chromosomal disorder. That is called as the chromosomal disorder. And that is under the Mendelian disorders, under the Mendelian disorders, that is we had already read the thalassemia. The disease thalassemia. The thalassemia is that is blood disorder disease, blood disorder or genetical blood disorder disease, where the chromosomes are where the abnormal hemoglobins are formed. Hemoglobins are formed. These abnormal hemoglobins causes the destruction of RBC, which leads into the anemia. Anemia means seta, blood re hemoglobin कमी गले anemia हो जाए, हला oxygen carry करी परिबनी. So the patient that is suffers from the tiredness, or the patient suffers from the tiredness and the skin becomes pale. The skin becomes pale and the patient produces the dark urine and the spleen is enlarged. The spleen is enlarged. Clear? And you know it is of two types, alpha thalassemia and beta thalassemia. Beta thalassemia is a common one and alpha thalassemia. Clear? Because there are two types, that is the hemoglobins are formed of 4 polypeptide chains. Among them 2 are beta chain and 2 are, that is the alpha globulin chain. The 2 alpha globulin chains are, that is controlled by HbA1 and HbA2, which are very closely, that is 2 linked genes and which are attached to the chromosome number 16. Then similarly, that is the
beta globulin is produced by a gene which is present in the chromosome number 11, and that is the HBB. That gene is called as the HBB. So in this way, and the thalassemia patient will survive if the transfusion of the blood will occur regularly, and the permanent, there is no, that is the permanent cure is, that is the bone marrow transplantation, which I have described everything in the previous class. Says clear? Then the chromosomal disorder. The chromosomal disorder, that is thalassemia is present in your, that is the course. In chromosomal disorder, the chromosomal disorder are obtained by the error in, that is the number or the structure of the chromosomes, and in them the error in number of a chromosome is common. The number in chromosomal or the error in chromosomal number is, that is a common, and which is, and sometimes that is without separation of the chromosomes during the cell division, the homologous chromosomes togetherly pass into the one side of the one part of the, that is the two cells. So in that process is called as non-disjunction, which I have already, that is described in previous classes, non-disjunction. Clear? And it is often mainly in meiosis type of cell division, and especially in oogenesis. Clear? In meiosis, actually the meiosis obtains or meiosis takes place in the gametogenesis, like spermatogenesis and oogenesis. But in case of the meiosis, it occurs mainly, and in case of oogenesis, it occurs, that is the commonly, because for the prolonged resting condition or prolonged resting condition of the meiosis 1. Clear? So under that we have read, that is two types of cells are present. One is the sex chromosome, another is the autosomes. So any change of the number of a chromosome in the cell is called as the aneuploidy, Clear? And the aneuploidy is of two types. One is, that is aneuploidy, that is when the number either increases or decreases, the total number of chromosomes either increases or decreases, then that condition of the cell is, or that chromosome is, that is called as the aneuploidy. Aneuploidy is of two types. One is hyperploidy, another is called as the hypoploidy. Hyperploidy and hypoploidy. Hyperploidy is excess, that is 2n plus 1 or 2n plus 2. When 2n plus 1, it is called as the trisomy. When 2n plus 2, it is called as the tetrasomy. Clear? And in case of hypoploidy, that is here the number reduces from the total number. Either it is 2n minus 1 or it is 2n minus 2. When it is minus 1, it is called as the monosomy. And when that is 2n2, that is 2n minus 2, it is called as the nullisomy. Clear? In this way, that is, it is this type of, that is the occurrence is obtained in both the sex chromosome as well as in autosomes. Both the types of the, that is the defects is occurred in, that is the autosomes as well as in the sex chromosome. If that is the autosomal monosomy is obtained in the embryo, then that embryo
aborted is aborted early pregnancy, is aborted at early pregnancy. Similarly, if that is among them, the monosomy and trisomy are common, I have told you, in autosomal and sex chromosomal. In autosomal monosomy, that is here, that is if a fetus or if that is the embryo contains the autosomal monosomy, then it is aborted early at the pregnancy. That is within 1 or 2 months, that is the child is, that is the aborted, or that is the child is destroyed. Then that is in case of the autosomal trisomy, then autosomal trisomy, that individual is died before the birth, So this is if any that is autosomal defect is born, then he will suffer from, that is the multiple physical, that is the disorder. He will suffer from the multiple that is the physical disorder, as well as that is the mental retardation and the mental retardation, and it lives for a short period. He or she lives for short period. Then under that is the allosomes or in the sex chromosomes, that is under that is the hyperploidy, that is hyperploidy means that is the 46 plus 1 trisomy is 1, that is called as the 47 number of chromosome, that is 44 plus XXY, that was that is the Klinefelter syndrome, that is under the sex chromosomes, that is under the chromosomal disorder under the sex chromosome, I have that is described 2 diseases. One is the Klinefelter syndrome, another is the Turner syndrome. Under the Klinefelter syndrome, where it is a trisomy, of that is the sex chromosome, it is a trisomy of sex chromosome, that means 1 chromosome becomes excess, that is 46 plus 1 is equal to 47, and that is genetical constituent is 44 autosome plus XXY. Clear? It is a sterile male or feminized male, that is a male, externally it is a male with reduced penis, reduced testis, and certain that is the female characters are developed later on, that is the gynecomastia. Clear? And that is the sterile. So feminized male is formed and it is a sterile male. Clear? Pilapili dei paribani, male heithibo kintu female character dekhuthibo. In hyperpolyploidy, that is monosomy, that is 46 minus 1 is equal to 45, that is 44 autosome plus 1X. It is a female with the male character, that is the sterile female. This is a sterile female. A female is born and this Klinefelter syndrome is obtained, that is 1 among the 500, and the Turner syndrome it obtains, that is the 1 among the 5,000, Clear? So that is the Turner syndrome obtains, that is the 1 among the 5,000. Clear? Then, so this is all about that is the sex chromosomal disorder under that is the chromosomal disorder, and which I have already described, that is previously. Then the last portion which is in your course is called as the Down syndrome, and the Down syndrome is that is the trisomy of 1 autosomes, and that is a special autosomes that is called as the trisomy of 21 trisomy. That is the chromosome 21. That is additional. That is this member is added, and this is called as the Down syndrome.
this defect is called as the Down's syndrome. Down's syndrome. Or it is called as the 21 trisomy, or it is called as the Mongolianism. Or it is called as the Mongolian idiocy. It is called as the Mongolian idiocy. It is called as the Mongolian idiocy. Clear? The Mongolism, or it is called as the Mongolian idiocy. Clear? It was first discovered by, that is, or it was first reported by, that is the John Langdon Don. John Langdon Don. John Langdon Don. In the year of the long, that is the reported by the John Langdon Don in the year of 1800. In the year of, it was reported on the 1866, in the 1866. But the cause was reported by, that is the Lejeune and his co-worker in the year of 1959. In the year of 1959. Clear? It was, it was caused, or the cause was found by the, Lejeune, by the Lejeune and his co-worker. That is the Lejeune and his co-worker in the year of 1959. Clear? So, the Down syndrome is called as the Mongolism or Mongolian disorder because that is the external structure of the individual bearing the Down syndrome appears as a Mongolism or Mongolian race. And it appears as the idiot. Idiot means boka. ये बोका भलिया देखा जाए. So its name is Mongolian. एटा देखिवा पाई किमिति ना Mongolian भलिया. Mongolian माने चाइना साइड से जो Mongolian सो छुटिया छुटिया लोक होइतिबे गोल मुह होइतिबो उठटा बाहर को बाहरी पड़थिबो जीभ बाहर को बाहरथिबो पाटीटा आ करथिबो ऊपर पत्ताटा एमिति तळकु एमिति नइथिबो हला बेकटा छोटो होइतिबो हला. So these are that is it types the Mongolian type, that is Mongolian जेमिति लोक सब रेस भलिया देखा होतो आ जणा पड़थोटा बुका भलिया एमिति तळ उठटा एमिति मुडी जाइथिबो आखिटा एमिति धुळेइला भलिया देखा होतो जीभटा एमिति काढी पकैथिबो आउ तार छुटिया छुटिया आंगुली गुडा हेतिबो आउ ए जो पामटा तार छुटियाटा हेतिबो आ पाम धेरे जो रिज गुडा सब रेखा गुडा सब इयाडे सियाडे मातिथिबो हला. सो आउ से कहूची आउ कौन हेतिबो कान दीटा टिकिल टिकिल गुल गुल कान हेतिबो हला आउ से माने बुका भलिया अनइथिबे सेइथि पई ताकू कहउची Mongolian idiocy or Mongolism. And the cause was what is the cause was reported by the Lejeune and his co-worker in 1959. से कौन कहिले से कहिले जे 21 trisomy तामाने हमर केते होवा कथा 44 autosomes plus x or 44 autosomes for x and y. This is male and this is female. एटी कौन हबो ना जतले सेल डिवीजन हबो सेतले कौन हबो ना 44 रु 22 आसीबो प्लस आइदर x आसीबो 22 autosomes plus x. Similarly एठी आसीबो 22 autosomes plus x and 22 autosomes plus y. Clear? किंतु एठी कौन हबो एटा ऑटोजोमल डिसऑर्डर नॉन डिसजंक्शन आमर केते क्रोमोसोम अछि 22 पेयर ऑटोजोम्स ता माने इमिति पेयर है कि केते पेयर अछंती 22 पेयर एटी 21 नंबर पेयर ता प्रति इंडिविजुअल पेयर अछंती एटी 21 नंबर इंडिविजुअल ता बा पेयर ता होमोलोगस पेयर ता सेपरेट हबो नाही
जिते सेपरेट न हम गोटे साइड की जिते 21 पेयरटा पलि ताने ऑटोजोम केते 23 22 युक्त आ गोटे ये एक्सट्रा थो ये गोटे गोटे आसला 22 आउ 21टा गोटे अधिका आसी तेणु इट इज द 23 युक्त एक्स है तेणु दैट इज एक्स जिते सेटा सियाड़ गोटे आसिक जुड़ सियाड़ गोटे आसिक जुड़ ताने कौन हम ना एठी अच्छी एटा कौन है 21 नंबर डबल अच्छी 21 नंबर एठी डबल अच्छी जो मेल साइड रू धर एटा फीमेल धर मेल साइड रू आसला ताने केते आसीबो 22 ए प्लस एक्स किंबा वाई एक्स किंबा वाई ताने एठी कौन हम केते हम ना एठी हम 45 एटा 44 होतला एटा हम 45 ऑटोजोम्स 45 ऑटोजोम प्लस एक्स वाई और एक्स एक्स और एक्स वाई ताने एटा केते हम 47 हम टोटाल केते हम 47 हम ये 47 है कौन है ना दिस इज द ट्राइजोमी ऑफ द 21 क्रोमोजोम ट्राइजोमी ऑफ क्रोमोजोम 21 माने एटा धर मेदल साइड रू दीटा आसी फादर साइड रू आ गोटे क्रोमोजोम आसीबो एटा हला होमोलोगस क्रोमोजोम 21 ये भी फादर साइड रू आइला 21 तन 21 टा केतेटा हे गला तीनटा प्रकृति रे ठीक सब ऑटोजोमडा रहइबा कथा केतेटा दीदीटा होमोलोगस किंतु एटी हे गला 21 टा हे गला तीनटा सो दिस इज कॉल्ड एज द ट्राइजोमी ऑफ द और 21 ट्राइजोमी इट इज कॉल्ड एज द 21 ट्राइजोमी जदि एटा हला एटा केटी होबो ना इन स्पेशली इन ओजेनेसिस मु तुमको कही जे ओजेनेसिस रे एटा अधिका हम कारण प्रोलंग्ड रेस्टिंग पीरियड हूँ मियोसिस रे जो प्रोलंग्ड रेस्टिंग पीरियड हूँ मियोसिस रे से जे प्रकार सब डिफेक्ट है क्लीन फिल्टर दैट इज द क्लीन फिल्टर सिंड्रोम टर्नर सिंड्रोम एगुड़ा सब आसला सेमिति से बेसी रेस्टिंग स्टेज हला बेले 21टा बेले बेले नर्स डिस्जंक्शन है कि पलि गला आउ एटा केटी हम नाइन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इनक्रीज ऑफ द डाउन सिंड्रोम इज मोर इन द एजेड फीमेल जदि गोटे फीमेल 45 वर्ष रु अधिका परे कनसीव करे बा पिला दिए 45 वर्ष परे ताले एई प्रकार डिफेक्टर एग से तैयारी करिवो एई प्रकार डिफेक्टिव एग से तैयारी करिवो जोथिरे 22टा अधिका गोटे क्रोमोजोम नै कि जाइथिवो तेणु से आमर हिंदू रे कहती दैट इज द डोंट मैरी टू द एजेड फीमेल्स दैट इज इट इज ए जेनेटिकल दैट इज द डिसऑर्डर इट इज ए दैट इज द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जोटा कि आमर ता आगुरु एटा प्रभाव होइकी रही जाइछि हला दैट इज द हिंदू माइथोलॉजी इज दैट इज हिंदू प्रोवर्ब्स और हिंदू माइथोलॉजी और हिंदू कस्टम्स is more than that is the science is more than science but if you analyze them then it justifies with the or the science or it justifies with the cause or it that is the justified or it is similar with the that is the science clear so this is the defect so what are the are you understanding me or not so what is the that means the that is the Down syndrome here the chromosome number will be 47 so what are the symptoms so this is the cause जानी हला ताने 21 number autosome ता maximum female case रे मेल केस रे जन हबो तार किछि माने नाही किंतु मैक्सिमम फीमेल केस रो गैमेटोजेनेसिस बेले बा ओजेनेसिस बेले डिफेक्ट है कि गुटे साइड के टोटल 21 टा पळैबो ताने आर साइड ओभम टार कोन थिबो 21 टा एब्सेंट रहइबो 21 क्रोमोसोम टा एब्सेंट रहइबो ताने सेटी केते हे जिवो सेती हे जिवो 21 टा सेटी हे जिवो 21 टा सेटी केते हे थांता ऑटोजोम 22 टा किंतु 21 टा पळै जाईछि हला 21 नंबर टा पळै जाईछि हला तेणु यहाँ तार डिफेक्ट तापर आम देखा जे व्हाट आर दी सिम्पटम्स एटा हेले कौन सिम्पटम्स हम फैटी राउंड फेस हम एमती चर्बी गुड़ाक जमा है कि फेसटा एमती चाइना लोक भाया गोल फेस हम आउ कौन हम
ब्रॉड फोरहेड ए कपाळटा टिके उसार हो आउ कौन हम ना डाउनवर्ड दैट इज द डाउनवर्ड स्ट्रेचिंग अपर लिड आई लिड ए ऊपर पताटा टिके तळକୁ एमती ढोलेला भलिया सब बेले हबो तापरे शॉर्ट नेक ए बेकटा एमती छोट हो जिवो आउ कौन हम ना फ्लैट हैंड ए हाथ गुडा उसारिया हबो फ्लैट हैंड एंड स्टबी फिंगर माने छुटिया छुटिया आंगुली हबो देन फिंगर टिप्स ए सब एमती कुंचा 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 आंगुली गुड़ा होकर रहिबो स्मॉल अंडर डेवलप्ड ईयर छुटिया छुटिया कान गुल गुल कान हबो आउ दैट इज शॉर्ट स्टेटस छुटिया साइज हबो आउ पामटा छुटियाटे हबो उसारिया हबो ता देर सब जो रेखा गुड़ाक इयाड़े साड़े सब माति थिबो हला तापर से कहूची आउ कौन ना जेहेतु एटा से कहूची जे जेहेतु ए माने मंगोलियन भलिया देखा गले एपियरेंस रे आउ तांकर कौन हला ना आउ तांकर कौन हला ना से माने बुका भलिया देखाबे कारण उठटा एमिति उल्टी पड़थिबो जीभटा एमिति बाहर थिबो हला आखिटा एमिति ढोलेला भलिया देखाउथो जेमिति बुका लोकटा हला आउ छुटिया साइज थिबो गोल मुह हला एमिति देखाउथो गोटे मंगोलियन भलिया मंगल हला ता माने एगुड़ाक आउ सेटा बुका भलिया देखाउथो तेणु ताकू कुहाइछि मंगोलियन इडियसी ता छड़ा सेमानकर आउरी कौन डिफेक्ट हम ना हार्ट एंड अदर ऑर्गन्स मे बी डिफेक्ट हार्ट भी डिफेक्ट हो पारे अदर ऑर्गन गुड़ा डिफेक्ट हो पारे आउ कौन कहूँ गोनाड्स एंड एक्सटर्नाल जेनेटेलिया आइदर से फीमेल हेले ओभारी आउ मेल हेले टेस्टिस एगुड़ाक अंडर डेभलप्ड हम बा डिफेक्टिव हम आउ कौन हम ना एक्सटर्नाल जेनेटेलिया पेनिस एंड भल्वा दे आर इरेगुलर इन फॉर्म आउ कौन हम दैट इज अंडर डेभलप्ड बा छुटिया छुटिया से माने मैक्सिमम दे मे सर्वाइव अप टू 20 इयर्स से माने मैक्सिमम 20 वर्ष पर्यंत बंची पारती है दि इंडिविजुअल्स से कहूँ जो माने डन सिंड्रोम होइथिबे तांकू लिकोमिया आउ दैट इज कॉल्ड एज अल्जीमर्स दि लिकोमिया होची ब्लड कैंसर अल्जीमर्स डिजीज सेटा कौन ना ब्रेन डिजॉर्डर कौन ना सेटार किछु मने रहिबोनी भूली जिबे एमती सब प्रकार डिफेक्ट हबो आउ ता छड़ा से कहूची जे कौन ना आउ किछि दैट इज द गुटे 3 ରୁ 4% गोटे प्रकार दैट इज द ये जो डन सिंड्रोम अच्छी से डन सिंड्रोम कौन हुए ना 21 क्रोमोसोम ट्रांसलोकेशन हुए दैट इज द 21 क्रोमोसोम ट्रांसलोकेशन माने धर मनकर ये गोटे पेयर अच्छी एटे केते पेयर एमती अच्छी एमती 22 पेयर बा 23 दैट इज 22 पेयर एक्स क्रोमोसोम को हेले 23 पेयर एमती एटा मनकर 1 2 5 7 एटा हूँ धर 14 एटा हूँ 15 एटा हूँ 16 ये मुझे गैप करदेली है ये 17 ये 18 ये 19 है ये 20 है ये 20 है ये 21 ये 22 एटा ऑटोजोम्स छाड़ी दियो आउ कोटा सेक्स क्रोमोसोम को छाड़ी दियो एटा हला गुटे पेयर एटा मन कर एक्स एंड वाई है तेणु सी कहूँ ट्रांसलोकेशन कौन ना 21 नंबर क्रोमोसोम रु किछि पोर्शन कटिज कटि जाइकी सेटा जेनेराली ये 14 सांगे लगिज 14 सांगे लगिज है एटा लगे आउ लेस कॉमन एटा क्या सांगे लगे ना 22 सांगे लगे भेरी लेस कॉमन एटा क्या सांगे एवटू कटि जाइकी आ सांगे लगला है ता माने एटा को कहती फेमिलियल डन सिंड्रोम एटा कहती फेमिलियल डल सिंड्रोम फेमिलियल डन सिंड्रोम एटा कहती फेमिलियल डल सिंड्रोम एटी कौन हुए ना एटी क्रोमोसोम नंबर 46 रहिबो एंड दैट इज द क्रोमोसोम नंबर आउ चेंज हेबनी कारण ये गोटे जगह कटि गला आउ गोटे जगह से जुड़ी गला है क्रोमोसोम नंबर 46 रहिबो किंतु दैट इज बट देयर इज ए पार्शियल दैट इज द ट्राइजोमी एटा पार्शियल ट्राइजोमी एटा फुल ट्राइजोमी नुहे है एटा को कहते फेमिलियल डन सिंड्रोम एटा बहुत बेले हुए दैट इज पार्शियल है माने ये पार्शियली सफर हम ट्राइजोमी बुझला सो दिस इज ऑल अबाउट द डन सिंड्रोम क्लियर विथ दिस दैट इज योर जेनेटिक्स इज फिनिश क्लियर सो आउ गोटे चैप्टर मोर रहिला पढ़ाइबा पई जोटा रहिला बायोटेक्नोलॉजी
सेटा 8टा कि 9टा क्लास नब किंतु बायोटेक्नोलोजीटा बोटानी रे मॉलिक्युलर बायोलॉजी न पढ़ा गले एटा पढ़ाई हम नहीं तेणु मोर रहिला आउ सेटा को पढ़ाई हम नहीं आ जदि मु कहबी जदि उमेश सार पढ़ाई देबे तो पढ़ाई देबे हला तो एटा को पढ़ाइले तुम बुझी पारिबो नाही बुझियो जेनेटिक्सटा तो कष्ट होथुवो पुणी ताकू सेटा होची डीएनए स्ट्रक्चर जानिबो जेनेटिक इंजीनियरिंग केमिति होची से विषय सब जानिबो केते गुडाक सब ट्रांसजेनिक एनिमल केमिति होची ट्रांसजेनिक प्लांट केमिति सब कहार कौन फ्यूचर से गुड़ाक आम टिके पढ़ा भारी माइन्यूट जिनस अच्छी जोटा कि डीएनए स्ट्रक्चर न जानले आम पढ़ाई पारिबा नाही सो विथ दिस दैट इज योर जेनेटिक्स इज फिनिश थैंक यू टू ऑल